Recap for you the entire markets trading action of the day and also help you understand what really moved the markets in today's trading session, as well as what will be the factors to watch out for in tomorrow's trading session as well. Let's quickly take an eye out on and keep understanding how the markets really moved in today's trading session. It was a gap up start. But the markets moved on to trade in a range bound fashion in sideways manner throughout the trading session, but it was only up until the second half of the trading session when we did see some of the gains getting paired of the first half of trading session. But the last hour recovery for the markets really worked in favor, and we actually saw both the Sensex and the Nifty regaining their crucial psychological levels of say 51,000 on the Sensex and 15,000 on the Nifty as well, and both of them they managed to inch up and close up above that as well, with 1% gains for the Sensex and the Nifty. 584 is the point addition for the Sensex that we saw today. 142 points got added into the Nifty index. That's a rise of 1%. Nifty Bank, however, outperformed the indices today. Most of the contribution in the gains in the markets actually came in from the banking and the financial space. 35,865 was the level at which Nifty Bank shut shop with 589 points of an addition. That's 1.7% uptick in today's trading session. However, it's the broader market space that really underperformed in the markets today. They both ended up in the red. However, 0.5% loss was seen in the BSE mid cap, in the small cap index, but the mid cap index also lost much more. 0.7% of a downtick for this index. 137 points lost for the mid cap index today. Moving on to find out what kind of sectoral moves did we see today. So you can actually see a mixed screen of red and green today as far as the sectoral movers are concerned. Some of the sectors that really contributed to the markets today included the financial services sector, that was up about 1.7%. Also the private banking index, that was up about 1.4% in trade in today's trading session. Apart from this, if you see, there were other sectors that really helped the market stay buoyant towards the second half, and that included the auto index, the financial services, the metal index also inched up higher. Remember, it was actually trading in the red in the earlier half, but then it did recoup some of the losses in the first half of trade. PSU banking index also gained a little bit more and ended with 0.2% gains in today's trading session. But it was the losses that came in from the media index, from the FMCG index. The IT index also recouped some of the losses. However, it traded just marginally lower at close in today's trading session. Realty index also ended up flat with a negative bias, with the pharma index losing about 0.3% in trade as well. Moving on to the top gainers and the losers space, the Nifty gainers included names such as SBI Life, Kotak Mahindra Bank, HDFC Bank, both HDFC twins actually performed about 3% and helped in contributing to the rise in the index today. Tech Mahindra from the IT space also gained in the last 1 hour to inch up higher at 3% in today's trading session. Kotak Mahindra Bank also up about 3.5% in today's trading session. So all of these gainers helped the markets and the Nifty index rise up towards the close of the session and over its 15,000 mark. As far as the laggards are concerned, you will see most of the names coming in from the oil and gas space, including BPCL, GAIL and IOC, that lost a lot of sheen in today's trading session. And the Tata Steel counter, remember the metal space, that was not performing, and it was this heavyweight counter that actually led the losses in the metal index today. 4% down, that is what we had seen. Remember, it's the global commodity prices easing that actually put the pressure in the metal prices in India today, and that's why we could see most of the weak trade happening in the metal space throughout the trading session. Power grid, that counter also saw some bit of profit booking taking place. 2.5% up downtick for this counter in today's trading session. Now moving on to understand what kind of move did we see in the primary market space. Easy Trip Planners, they came out with their IPO 2 days back. In fact, yesterday, if you see, today was the day 2, and we've already seen strong response from the investors on this front. अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला है. अगर आप इस IPO की बात करेंगे, पहले ही दिन इसे ओवर सब्सक्रिप्शन मिल चुका था, और आज अभी तक अगर आप देखेंगे 3:30 बजे से पहले ही 6 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब ये IPO होता हुआ नजर आया है. इसका जो प्राइस पैन है 186 से 187 रुपीज पर शेयर का है.
और ये इशू मार्च 10 को क्लोज होता हुआ नजर आएगा। ये पूरी तरीके से एक OFS है, 2 एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स अपने शेयर्स को ऑफलोड यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन देखना यह है कि अब आगे जाते हुए इसकी लिस्टिंग किस तरीके से होती है अगले हफ्ते। अगर आपको भी इसमें दिलचस्पी है और इस IPO में आप भी सब्सक्राइब करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि एक्सपर्ट्स की क्या राय है, तो money9.com पर लॉग ऑन करके इन सभी एक्सपर्ट व्यूज के बारे की जो राय है उसे पढ़ लीजिए और साथ ही साथ जो टॉप ब्रोकरेज हाउसेस का व्यूज है वो भी आप जान सकते हैं। चलिए इसी के साथ देखते हैं कि कल के लिए कौन से क्रूशियल फैक्टर्स होंगे ट्रैक करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट होगा क्रूड ऑयल प्राइसेस को देखना, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस अभी काफ़ी हाई चल रहे हैं। लगातार 9th कंसेक्यूटिव डे है जब हमने कोई पेट्रोल और डीजल प्राइसेस पे चेंज नहीं देखा है और इसीलिए आप देख रहे हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के शेयर्स जो है BPC, LIOC, इन सब में आज काफ़ी वीकनेस देखने को मिल रही है। $68 प्रति बैरल के हिसाब से ब्रेंट क्रूड आज सुबह ट्रेड कर रहा था। देखना ये होगा कि यहाँ से कुछ कूलिंग ऑफ पीरियड देखने को मिलता है या नहीं, या फिर अभी भी हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस रहेंगे। और अगर ऐसा रहते हैं तो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट्स की जो रैली है उस पे कहीं ना कहीं कैप करता हुआ क्रूड ऑयल प्राइसेस नजर आते हैं। US बॉन्ड डील्स, जिसकी वजह से इनिशियल बाउट्स ऑफ वॉलेटिलिटी और करेक्शंस के जो फेसेस हमें इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल रहे हैं वो US बॉन्ड डील की वजह से है, क्योंकि ये ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स को काफी इंपैक्ट करते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से कितनी खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल सकती है ये देखना बहुत ही ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा था करीब 1500 करोड़ रुपए तक की बिकवाली करी थी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इंडियन इक्विटीज में, और देखना यह होगा कि यहां पर कुछ ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला है या नहीं, खास तौर पर क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी होगी, उसकी वजह से भी काफी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। क्योंकि जब भी वीकली एक्सपायरी होती है तो वॉलेटाइल मूव्स डेफिनेटली मार्केट्स में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अब देखना यह होगा क्योंकि थर्सडे की वजह से थर्सडे को क्योंकि वीकली एक्सपायरी यूजुअली होती है, लेकिन इस बार थर्सडे को शिवरात्रि की वजह से मार्केट्स बंद रहेंगी और इसीलिए वीकली एक्सपायरी शिफ्ट हो गई है एक दिन पहले, यानी कि वेडनेसडे को। तो कल आपको देखना होगा कि वॉलेटिलिटी ज्यादा इफेक्ट करती है मार्केट्स को या नहीं, और ऐसे में आपकी रणनीति को किस तरीके से आपको बनानी चाहिए कल की ट्रेडिंग सेशन के लिए, यह हम आपको लगातार बताते रहेंगे। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ Money9 पर।